This hour, the Lok Sabha on Tuesday passed the anti-cheating bill to check fraudulent practices such as leaking of exam papers in government recruitment exams. Congress said it supported the bill, but added that larger measures are needed to get rid of corrupt practices in the education sector. The bill, though, was welcomed by students. Public Examination Prevention of Unfair Means 2024 will be passed. With an aim to ensure fairness in competitive exams, the centre has passed the anti-cheating bill in the Lok Sabha. Covering government recruitment exams, the bill promises strict penalties from 1 crore rupees fine up to 10 years of imprisonment. The centre emphasized on the urgency of the issue. पश्चिम बंगाल में नवंबर 2022 में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का पेपर लीक होता है और उसी प्रकार स्कूल सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल का भी पेपर रिलीज होता है। दिसंबर 2022 में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम राजस्थान में पाया जाता है और 2018 से लेकर के अब तक राजस्थान में इस प्रकार के 12 घोटाले हुए। This bill comes close on the heels of 41 cases of exam paper leaks in the last 5 years. Over 1.4 crore students have been impacted due to these cases. They were vying for 1 lakh posts at different levels. Rajasthan, Madhya Pradesh, Telangana and Uttarakhand are among states with most cases of recruitment exam paper leaks in this time period. The opposition agreed that it was an important bill, but added that larger changes are needed. जिस तरह से अनियमितता हो रही है और इरेगुलर सेशन हो रहा है, उसको पहले ठीक करने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन में सबसे बड़ा गड़बड़ी तो ये कि जिस तरह से शिक्षकों की कमी है, सब में 50% से ज़्यादा जगह खाली है। The Assam government too has tabled a similar bill in their assembly. As per the bill in Assam, state government will designate special courts for trial of paper leak cases. Bill proposes imprisonment of 5 to 10 years, fine of 10 lakh to 10 crore rupees as penalties. Once convicted under this new law, a person cannot appear in any public exams for 2 years. Institutions found guilty in malpractices can be banned forever. In 2022, Assam government had to enforce a mobile internet shutdown during Assam government's recruitment examination for few hours to ensure that no malpractices takes place. In recent past, there have been cases of paper leak, and therefore, when this bill gets passed in the state legislative assembly, Assam would be one of the first states to bring strong legislation to check paper leaks and exam malpractices. Students across India have welcomed this move. I'm definitely very happy with the bill that is passed. I do very much look forward to the implementation. Glad that the state is taking the initiative, to care about the future of the country. When competition needs to thrive, cheating needs to be curbed. Only then students will know the value of learning. I can't help but remember one of the famous dialogues from a Bollywood movie that is based on UPSC exams. Bahar ke andhere se, andar ke andhere se daro. With Ratnadeep and Harsha, Pratibha Raman for NDTV. All right, let me bring in my guest. Dr. Tanu Jain is a founder of the Thastu, and she's also a teacher at present, former civil servant. We have Dr. Vikram Singh, Chancellor of Noida International University, and several students, Ranjit Kishanvansi, Abhishek Kshitij, Lakshya Pratap Singh, Radhe Jat. All of them are students and are, aspirants of various employee selection boards. I'm going to begin with you, Kshitij. Are the students satisfied? Are they hopeful that in multiple states, एक despondency हो गई है students के बीच में that whatever said and done there will be paper leaks, there will be dates that will be delayed, everything will not fall in place. Is there some hope now after this bill? मैम होप तो कैसी करें, अभी इन्होंने सिर्फ बिल पेश किया है, बिल के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा ये देखना पड़ेगा और फिर इनमें जो लोग एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो लोग सीधे तौर पे शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसमें प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनका फेलियर है, उस फेलियर को शामिल किया जाएगा कि नहीं, उन पे कोई कार्रवाई होती है कि नहीं। फिर दूसरी चीज क्या है कि जो एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे उसके बाद हमारा क्या होगा, जैसे अभी हमारा पटवारी घोटाले में हुआ
कि हमारे एग्जाम अटके हुए हैं, हम लोगों के सही तरीके से उसकी जांच भी नहीं हो पा रही है। जिस कॉलेज में पेपर घोटाला हो रहा है, कॉलेज को आप बैन करने की बात तो कर रहे हो कि उस सेंटर को बैन कर दोगे, लेकिन जिस बंदे का कॉलेज है, जिसने ये सारी चीजें करी हैं, उनके साथ क्या होगा? तो ये एक होप इसको हम क्या कहें, बस इतना है कि इन्होंने एक चिराग जला दिया है, लेकिन वो चिराग कब हमारे लिए रोशनी देगा वो नहीं पता चल पा रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं आपके कि चिराग तो जल गए लेकिन रोशनी कब आएगी ये पता नहीं चल रहा है। तो लार्जली as far as you are concerned, you're despondent. I can see my colleague Harsha as well. Harsha, welcome on the show. More reactions now from more students. Lakshay Pratap Singh, आपका क्या व्यू है इस बिल पर? मैम डेफिनेटली हम सभी छात्र जो है इस बिल का स्वागत करते हैं। हम लोगों को बहुत परेशानी आती है। जब मैं खुद की बात करूं अगर मैम, तो मैं यूपीएससी परीक्षा की भी तैयारी कर रहा हूं और साथ में मेरा जो राजस्थान स्टेट है उसकी आरपीएससी जो स्टेट सर्विसेज की एग्जाम्स लेता है उनकी भी तैयारी कर रहा हूं। अब यूपीएससी परीक्षा जो है वो आउट नहीं होती है, उसका पेपर आउट नहीं होता है और उस पर कोई सवाल नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि उसका एक कैलेंडर जारी होता है, उसका एक टाइम टेबल होता है, उसमें नियमितता होती है, उसमें निष्पक्षता होती है। लेकिन राजस्थान में या विभिन्न राज्यों में अगर हम देखते हैं तो वहां पर लगातार या तो पेपर लीक की घटनाएं सामने आती है, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट शामिल होता है, या फिर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो लगातार कहीं ना कहीं हम आरपीएससी जैसी संस्था अगर उससे पेपर आउट होते हैं तो हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो आरएएस परीक्षा की एग्जाम है, आरपीएससी के अंदर हमको नौकरी जिससे मिलने वाली है, और उसी पर अगर वो संस्था इस परीक्षा को निष्पक्ष और नियमित रूप से कराने में कामयाब नहीं हो पाती है तो फिर हम लोगों का मोरल डाउन होता है लगातार। जैसे अगर आप आरएएस एग्जाम की बात करें तो 3 साल में एक बार एवरेज एग्जाम आता है, उस बीच में जो छात्र होता है साधारण परिवारों से आया हुआ होता है, उसको और भी परीक्षाओं की तैयारी करनी होती है। कोई टीचर की तैयारी कर रहा होता है, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा होता है। तो जैसे मैंने भी परीक्षाएं दी, कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा होता है, मैं मेरे साथ में मेरे कई सारे साथी मित्र थे जो आरएएस परीक्षा या आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और बीच में उन्होंने और भी एग्जाम दिए। तो लगातार जब बीच में 2-3 एग्जाम उन्होंने मेहनत करके अच्छी तैयारी करके दी है और वो एग्जाम जब पेपर आउट होता है उनको पता चलता है, तो जो आगे वो और भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनका मोरल डाउन होता है। उनके माता पिता किसान, हम सामान्य परिवारों से आते हैं, हमारे पेरेंट्स जो है वो किसान वर्ग से आते हैं, मजदूर वर्ग से आते हैं, और जब वो अपने जीवन भर की कमाई हमारे पढ़ाई के अंदर लगाते हैं और फिर उसके बाद में पता चलता है कि हमने भी अपनी जवानी के 5-6 साल लगा करके और जिस परीक्षा की तैयारी की उस परीक्षा का पेपर आउट होता है, हम लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता है। तो अगर ये जो केंद्र सरकार ये बिल लेकर के आई है और प्रभावी तरीके से, जैसा कि मेरे अन्य साथी छात्रों ने कहा, प्रभावी तरीके से इसको लागू किया जाता है तो इसमें निश्चित तौर पर पूरे देश के युवाओं का भला होने वाला है। युवा जो है किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। रंजीत, आपको उम्मीद है कि सिचुएशन इंप्रूव करेंगे? क्योंकि जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें ये भी साफ तौर पे लिखा गया है कि रोबस्ट आईटी सिक्योरिटी सिस्टम और सर्वेलेंस होगा एग्जामिनेशन सेंटर्स में, लेकिन अगर उससे पहले ही पेपर लीक हो जाए तो you know the entire nexus is worth several 100,000 crores, एंड अगर 1 करोड़ का फाइन भी है तो सब लोग बोलेगा कि बाकी लोग बिजनेस कर सकते हैं, बाकी लोग पेपर लीक वाला काम कर सकते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक पहल की। उन्होंने छात्रों की ये जो एक राष्ट्रीय समस्या थी, ये किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं थी कि मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान में भी पेपर लीक हो रहे हैं, यूपी में भी हो रहे हैं, बिहार में, पूरे देश में पेपर लीक हो रहे थे और इसके ऊपर एक राष्ट्रीय कानून बनने की बहुत लंबे समय से हम मांग कर रहे थे। तो इसके ऊपर उन्होंने एक कानून बनाया और एक इंसेंटिव लिया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन इस कानून में जो कुछ चीजें हैं जिसके कारण जो दोषी है वो बचकर निकल सकते हैं, उनके ऊपर भी मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से सरकार तक और छात्रों तक और सरकार के लोगों तक ये बात पहुंचे। देखिए, इन्होंने पेपर में इसमें डाला है बिल में कि यदि कोई कंपनी गड़बड़ करती है और उसके ऊपर दोष सिद्ध होते हैं तो उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना और 4 साल के लिए उसको बैन किया जाएगा। तो इसमें हमारी मांग है कि उसको परमानेंटली बैन किया जाए, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि यदि कोई कंपनी मध्य प्रदेश में बैन हो जाती है तो वो जाके उत्तराखंड में ठेका ले लेती है, उत्तराखंड में बैन हो जाती है वो तो जाके यूपी में ठेका ले लेती है। तो इस प्रकार से वो अपना साइकिल चलाते रहते हैं। तो जो भी कंपनी इसमें दोषी पाई जाती है उसको परमानेंट बैन किया जाना चाहिए। 4 साल वाला ये प्रावधान को परमानेंट में बदलना चाहिए जी। दूसरा, इस पूरे बिल में जी ये जो जांच की बात की गई है, वो जांच की कोई समय सीमा नहीं है। जांच चालू होगी वो 1 साल में होगी, 2 साल में होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 में पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, उसकी जुलाई में जांच सरकार ने बैठाई, आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं चाहता हूं
और स्टूडेंट चाहते हैं कि इसके अंदर समय सीमा तय हो जांच की, ये बिल में ये आना चाहिए। इसके साथ ही जो अलग अलग इसके अंदर बोला है कि सेंट्रल की ये जो आयोग है, बोर्ड है, वो तो इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश स्तर के बोर्ड हैं, जो मध्य प्रदेश में जो व्यापम जैसे बोर्ड हैं, जिसका समय समय पर नाम चेंज हो रहा है, क्या वो इस बिल और इस कानून के दायरे में आएंगे क्या? इसके बारे में भी इसमें कोई अभी तक स्पष्ट चीजें नहीं है। और इसके साथ एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये जो बोर्ड है, आपने कंपनी पर तो बात कर दी कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन जो बोर्ड के और जो चयन बोर्ड है, मंडल है, जो एग्जाम कंडक्ट कराने का काम कराता है, उनके ऊपर और उनके अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? तो इसका भी इस बिल में पूरे में कई जिक्र नहीं है। To perhaps have certain amendments are valid. You know, Dr. Jain, the suggestions that are coming in from the students who have suffered, and perhaps this gives them a ray of hope, is that there should be a permanent ban on these companies which are found to be carrying out this entire scam. It should also be, the investigation should be time bound. That, you know, it cannot be indefinite. Absolutely, Marya. We have to see that examination, specifically government examination for public institutions, is not just a matter of students. It is a matter of national efficiency. It's a matter of society also. Supposedly, if a bad student enters into the system and becomes an officer, that officer will corrupt or rather use unfair means in their further life also. So we have to take it very seriously as an issue, and I think it's a very right step by state governments also, because Uttarakhand and Assam has also brought in such legislations, and national government now has taken cognizance of it and brought this bill. I am very happy. Now it's an Lok Sabha has passed it. So this is one thing. Second thing, the private companies who are responsible for holding these examinations, they should be held accountable. At the same time, the cost of examination should not rise. Okay. So we have to find a balance. Yes. So there has to be need for balance, and also how it will be implemented in letter and spirit. Harsha, you know, during the assembly elections that were held in Rajasthan, this was also a talking point, almost like agenda against the Ashok Gehlot government. They said that we did our best, but the BJP was saying that it was not enough, and then it became like an election issue. With this kind of legislation, what do you see are practical problems on ground? Well, you know, Marya, our experience of covering this in Rajasthan has been, definitely it was an election issue. But you know what happened was that if you look at the figures, in the past 10 years, so 5 years of BJP government, 5 years of Congress government, there have been 33 paper leaks in Rajasthan. 33 examination paper leaks. That's absolutely huge. And you know, today I went to meet Mr. V.K. Singh, who's the ADG, SOG. He's also in charge of the SIT that the Bhajan Lal government has set up. And I found that conversation very interesting with him, because, you know, he said the police's role is when the examination is being conducted. So once the paper is moved to the treasury where it's kept, and then it moves into the examination hall. But you know, what will happen? You're talking about a nexus. What about the complicity where the exact question papers are being set? And somewhere the Ashok Gehlot government received a lot of flack because it was found that the Rajasthan Public State Services Commission was complicit in leaking examination papers. I mean, Mr. Babu Lal Katara, who's been suspended, who's in jail, he was a member, he was in charge of the Rajasthan State Public Services Commission. They were setting the question papers, and they were probably also leaking them. So look at the nexus. I mean, how do you get to the bottom of that? So I think that really is the larger question. And like you're saying, those are the practical problems. The police can come into play once the exam paper has been set, and they can ensure a free exam. But what if the people who are making the papers are themselves leaking it? That's the point there. If people who are making the papers are leaking it, then Vikram Singh, what can be done? Marya, good evening. Very important points have come from Harsha ji and Dr. Tanu. Yes, it has to be fail-proof and fool-proof. What this bill is supposed to do is to address something that has assumed epidemic and alarming proportions.
paper leaks was something that happened once in many, many decades. But now it is impacting no fewer than 15 million students right across 6 states. And therefore, the very fact, the starting from the beginning of setting of the question papers right to the drafting, its printing, its distribution, and also the OMR sheets. This bill addresses not only the question papers, the answer mechanism, as also the computer systems. It addresses the entire ecosystem of setting of question papers right up to the evaluation. And yes, the deterrence is such 1 crore to 10 crores and also 10 years of fine. And what has not been mentioned is confiscation of property acquired through dubious means. This has been identified as an organized crime, not an isolated crime, not a petty crime, but an organized crime. And therefore, the consequences of being a beneficiary of an organized crime, that all your assets, movable and immovable, are liable to be confiscated by the government. That, of course, is also made a deterrent. All offenses are cognizable, are non-bailable, and compoundable. Therefore, the deterrence is very much there. But as I think one of the learned speakers, I think it was Lakshya Pratap who mentioned, that unless these laws are faithfully implemented, it is good to have small number of laws that are faithfully implemented than to have large number of laws that are loosely implemented. Therefore, the deterrence, and as you say, that the law should be such, it should come down like a ton of bricks on the defaulters and give a message for a lifetime. If that does not happen, well, our youth are for a very troubled time, but I'm sure this is with a sense of purpose, and I'm sure our students and those on the panel will not be disappointed because the sense of purpose is very much there. Dr. Vikram Singh, you know, I'm looking at the provisions in the law. It goes on to say that the police will be empowered to act on its own and arrest suspects without a warrant. But what if the police themselves are involved in this offense? That is, you know, we have seen that nexus, how it operates. And the accused will not be entitled to bail and the alleged offense cannot be settled via compromise. You know how the police system works. You have been a former DGP yourself. Marya, that is a very left-handed one. But I would say that, yes, you have identified a true problem. If the police are complicit, and very often they're not above board. And if they're not above board, there are at least 20% of the cases where the police themselves are a part and parcel of this organized crime in being actively and passively involved in the copying mechanism and the copying mafia and the examination leaks mafia. Therefore, the police leadership has a job to perform to give this to those police officers with unimpeachable integrity and those with proven track record of professional competence. Only they should be entrusted with these sensitive investigations and these sensitive duties so that these operations are absolutely transparent, credible and trustworthy. Okay, Radhe Jat is a member of National Educated Youth Union. राधे, आप मुझे बताएं कि कितने होपफुल हैं कि आप इस बिल को के पास होने के बाद, ऑफ कोर्स राज्यसभा में भी अभी पास होना बचा हुआ है। हम लोग बड़ी खुशी हो रही है कि एक जिस जो पूरे देश के युवाओं के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था और ये जो केंद्र सरकार ने बिल लाई उसका हम वेलकम करते हैं। लेकिन आप जाएंगे, हम लोग जब स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, हम लोग मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश का अगर नाम जाना जाता है पूरे इंडिया में तो वो जाना जाता है व्यापम के नाम से। 2013 से 65 लोगों की जान गई है। व्यापम 1 हुआ, व्यापम 2 हुआ, व्यापम 3 हुआ। पटवारी में जिस तरह से मेरे साथी रंजीत ने आपसे डिस्कशन किया, 13 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे, 8 लोगों ने एग्जाम दिया था। उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जांच बिठाई, रिटायर्ड जज से जांच कराई, उसको चुनाव के पहले उसको सारी चीजें बच्चों को भविष्य को बीच में रोक के जांच कराई, आज तक जांच नहीं आई है। उसमें जो रिपोर्ट में जो आ रहा है, मीडिया के हाउस से पता चल रहा है, उसमें ये पता चल रहा है मैडम कि उस जांच में जो जज ने जो जांच की उसके पास कोई पावर ही नहीं था नीचे तक किस तरह से जांच की जा रही है। इस तरह से और जो सिस्टम हैक होता है, आज ये अभी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की बात है, जब सरकार को अभी जब ये बिल लाई थी तो जितनी ब्लैक लिस्टेड जो कंपनियां थी उनको 4 ईयर के जो लाइफ टाइम उनको बिल बैन करना था, जो ऑलरेडी हैं। अभी जितने भी ये हुए हैं, जितने भी स्कैम हुए हैं, इसमें वही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाता है। और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आया, 65 लोगों की जान जा चुकी है मध्य प्रदेश में व्यापम में, और आज भी सीबीआई जांच चल रही है। आज बताइए
13 से चल रहा है, आज उसको 14 साल हो चुके हैं। इतने लोग होने के बाद भी तो हम चाहते हैं कि इस पे, और सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट अधिकारियों का। आप देखिए पेपर कहां बना, आपका इसमें सिस्टम फेलियर है, ये क्राइम है, और ये अधिकारियों के द्वारा किया है। जब ये व्यापम बम हुआ था तो सारे अधिकारी इन्वॉल्व थे। पेपर बनेगा सारा, सबसे पहले जब सब सिस्टम पूरा, जैसे व्यापम के पास है तो एक सिस्टम, उस सर्वर पूरा, जब कोई भी पेपर हैक होता है, जैसे अभी पटवारी का पेपर हैक हुआ था कि सॉल्वर एक होटल में बैठा था और यहाँ पे वो एग्जाम्स, कोई सिर्फ डमी टाइप से एग्जाम दे रहा था, तो आप उसको किस तरह से पकड़ेंगे? अब इस तरह की जब चीजें होती हैं तो ये पूरा जो बच्चों का भविष्य बड़ा गर्त में चला जाता है। आज 8 से 9 हजार बच्चे हमारे मध्य प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं, और इसमें ईमानदार बच्चों की क्या गलती? आप इनको तो सजा दे रहे हो, और 4 साल की सजा क्या होती है? वो बच्चा जिसने गाँव किसान मजदूर का बेटा के, देखिए गवर्नमेंट जॉब कौन करता है? गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद किसको होती? जो गांव गरीब का बच्चा, तो उसको सम्मान मिले, गवर्नमेंट जॉब मान्यता है, और उसी के साथ ये खिलवाड़ हो जाता है, और उसी के कारण ये इतने। और दूसरी भाई आपने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए शायद ये बिल आया है कि ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी हो पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम की, and that is the big question. Let me go back to the women on the panel, and then I'll try and wrap it up with the students. Harsha, you know, you had raised a very practical challenge to a bill of this nature. This is a very well-oiled machinery which is operating. The competitive examinations and tests have been cancelled all across India, and these recruitment exams have meant that all these efforts that have been put by students for years and years goes down the drain. But when it is about those practical challenges, if the examination, the leaks are happening from the place where the papers are being actually prepared, then how do you plug that leak? Absolutely, Marya. And you know, the other very, very practical problem in this entire thing is that, you know, the Rajasthan Special Operations Group, which is probing the paper leak scam in Rajasthan, has actually charge-sheeted 151 people so far. And overall, over the past 10 years, 600 people. Now, when is that case actually going to come to an end? Can you imagine 151 people charge-sheeted? That means they are accused, spread out across Rajasthan. Now you're going to take someone from Bharatpur to Jodhpur to somewhere else for the trial. How are they going to have the trial? It's a logistical nightmare for the police. So, you know, they're actually grappling with these kind of problems also. Like you're talking about the nexus and the well-oiled machinery, this was spread across Rajasthan. Imagine 151 people accused in this scam. That's much, much more than Vyapam. And it has become almost like a trend, acceptable. Why, Tanu? Do you think it will take a lot of time before, you know, the system falls in place? Because this is a machinery which has been working for years. And there is a degree of understanding between all the players here. How do you fix it? If the larger intention is to leak papers and ensure that the system becomes so opaque that the genuine students do not get their due. So I think we have to start somewhere, and now we are starting. All the bad practices, evil practices, all the problems in the system have been solved by bringing a law first and then implementing it, improving it step by step. So we cannot say, you know, overnight everything will become ethical, all the exams will become transparent. But yes, now the demands of the students have been there. We are talking, we are discussing. This means that there is a attention, or rather we all are focusing on this very important issue of our governance. And this, I think, will bring change. So slowly and steadily, as the stringent laws are brought in, implementation is done in a fair manner, and we see the outcome and accountability. We fix accountability of the people, bureaucrats, private companies, service providers, students, everyone should have their accountability fixed. And once it is fixed, the punishments and other incentives of being ethical will actually keep the system clean then. And Dr. Vikram Singh, do you agree with the stand that has been taken that the students or the candidates have not been kept under the purview of this law?
Do you think that's a Rightfully fair so. decision? I think that's a very fair decision. As in effect, in any case, they are the victims of this organized crime. Yes. They are the victims. And then to penalize them as also because they happen to be a part of the tsunami, they are the end product of the tsunami, and to penalize them would have been very fair. And I'm very satisfied that they have been kept out of the purview of this Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024, and a very sane and a very mature decision. All right. Abhishek, you wanted to come in, please. आप बताइए क्या बोलना है आपको? मैम एक्चुअली अपन देखें तो बिल में ना उन्होंने सिर्फ 15 पॉइंट ऐड किए हैं कि इन 15 तरीकों से ही माना जाएगा कि ये अवैध गतिविधियां हैं। क्या आप इसमें ये चीज नहीं मान सकते हैं कि जो पेपर चेक कर रहा है, चेक करने में कोई चीजें हो सकती हैं, आप उनको रोल नंबर या किसी भी तरीके से पहुंचा सकते हैं, वो लोग नहीं शामिल हैं। दूसरी चीजें आप इस बिल में एक चीज और आप देखेंगे कि जो लोग मतलब पॉलिटिकल डिसीजन भी तो इसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिक्स के लोग भी तो आएंगे। कोई भी मंत्री है जिसके अंडर पे अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा, इसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? मैम ने भी बोला कि इसमें अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेट्स। मैम लगातार यहाँ यही चीजें देखी जा रही। हम लोग जो पटवारी घोटाले में जो हम लोग हैं, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम इतने दिनों से बैठे हुए हैं, फिर हमारी फीस का क्या होगा? एक बार एग्जाम कैंसिल कर रहे हो आप, एग्जाम दोबारा हमें एग्जाम के लिए फीस भरनी पड़ती है। मैम एक एग्जाम की फीस हम 500 रुपए भरते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए महीने यहाँ इंदौर जैसे शहरों में रह के तैयारी करने के लिए लगते हैं। हम एक बार किसी तरीके से एक एग्जाम भर रहे हैं, फिर उसमें दोबारा से हम एग्जाम को फिल करेंगे, दोबारा हमसे फीस वसूली जाएगी, हमें ट्रेवल करके, एक तो सेंटर्स दिए जाते हैं, हमें दूसरी सिटी में ट्रेवल करके जाना होता है। कितनी सारी समस्याएं हैं, उन सब चीजों को झेलने के बाद हमें 5-5 साल तक यहाँ पे रिजल्ट्स का इंतजार करना पड़ेगा। उन सब चीजों को फिक्स कौन करेगा? उन पे कौन बात करेगा? इन सब चीजों में ले दे के कौन अगर आके फंस रहा है? पॉलिटिकल लोग आ रहे फंस रहे हैं और उन्होंने अपने आप को इससे बाहर रख रखा है। कोई भी इसमें डायरेक्ट बड़ी मछली इसमें फंसी नहीं रही है। हर कोई आप छोटे बंदे की तरफ आप बस उंगली दिखा रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? आप एक बड़ी पिक्चर दिखाना चाह रहे हो तो फिर आपको कुछ बड़ा डिसीजन उसमें शामिल करना पड़ेगा। ओके हर्षा, ये बड़ी मछली, the involvement of the political class is something that cannot be brushed under the carpet here. I think that those were absolutely the allegations in this Rajasthan election, weren't they, Marya? That's right. I mean, the fact that the Rajasthan State Public Services Commission was constituted by this government, and that's why there's a political slugfest right now going on in Rajasthan, because the Congress now, which has lost this election, is telling the BJP, why don't you disband the State Public Services Commission, as you had said before before the elections. That has another set of practical problems. So absolutely, I mean, somewhere why the Ashok Gehlot government paid the price for exam paper leaks was because it was seen that the people they had put into the Public Services Commission were somewhere responsible for paper leaks and for the disheartening disappointment that students had to face. And I think that's one reason why the youth vote went against them. Yes, and Ranjit, so, you know, the students have made their point. Their concerns are valid. Would you have, you know, how much of responsibility you feel is there with the students here? Of course, they are the victims of this entire scam which unfolds. It is an organized crime which is clearly visible here. Do you think it's also coming too late? जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो पेपर खरीदने का काम करते हैं बिचौलियों के पास, उनकी भी इसमें जरूर दोष बनता है। लेकिन हमको इसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि आखिर आदमी नौकरी किसी भी हद पर लेने को तैयार क्यों है, चाहे उसको पैसे में मिले 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वो नौकरी लेने के लिए इतना उतावला क्यों है? क्योंकि इसकी मेन जड़ है कि नौकरियां, यूपीएससी और पीएससी को आप छोड़ दो, एसएससी की भी अब पूरा तंत्र गड़बड़ है। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में आप देखेंगे जो प्रदेश स्तर के बोर्ड हैं, उनमें 4-4, 5-5, 10-10 साल के बाद कोई एग्जाम आती है। और जब कोई एग्जाम आती है तो छात्र को ये लगता है कि ये मेरे जीवन का वन टाइम है, इसके बाद मेरे को मौका मिलना नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद एग्जाम आएगी। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जो एग्जाम की भर्तियां रेगुलर नहीं होती है, 4-4, 5-5, 10-10 साल बाद होती है, तो छात्रों को ऐसा लगता है कि एन के एन प्रकार किसी भी तरह से हमको पद उठाना है, हमको वैकेंसी लेना है। और कई गांव में आप देखेंगे, जैसे
हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर रीजन में आप देखेंगे तो जब तक एग्जाम आप अफसर नहीं बन जाते, गवर्नमेंट नौकरी आप नहीं ले लेंगे, तब तक आपकी शादी भी नहीं होगी। आपकी शादी के लिए भी एक गवर्नमेंट नौकरी होना जरूरी है। तो बहुत सारी एक मेंटली प्रेशर रहता है, तो उस कारण छात्र भी चाहते हैं। लेकिन सबसे मेन तो ये है कि इसमें जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसमें जब तक प्रदेश के बोर्ड और इनको कानून के दायरे में नहीं लाया जाएगा तब तक ये कानून प्रभावशाली नहीं है। और इसके साथ एक बात और मैं रखना चाहता हूँ। आप जब चुनाव के समय आप इंदौर आए थे, उस समय भी मेरी आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि आप जो बात बोल रहे हो उससे तो ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में घोटाले और आंदोलन के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में हमने कहा, इसके पहले हमने एक बिल भी बनाया, उसके लिए हमने सत्याग्रह भी किया कि मध्य प्रदेश में भर्ती कानून नाम का एक हमने ड्राफ्ट बना के सरकार को दिया था कि रेगुलर बेस पे भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो उसका टाइम पीरियड हो, 10 माह के अंदर भर्ती होना चाहिए। अभी कोई भर्ती होती है, उसका रिजल्ट आने में अभी 2019 में भर्ती हुई थी पीएससी की, उसका रिजल्ट 2024 में आया। एक भर्ती 19 में उसका 5 साल लगा रिजल्ट आने में, और अब ज्वाइनिंग होने में 5 साल लगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसका एक रेगुलर भी होना चाहिए, उसके ऊपर भी सरकार को काम करना चाहिए। Before I bring in Lakshya, I want to understand from you, Dr. Vikram Singh, quick 30 seconds to you. Is there a provision in the bill just for our viewers to make it, to not have the results come in after so many years of exams? Not in the bill as such, but perhaps in the intent that yes, this process has to be streamlined to make it transparent, and transparency would mean that the starting of the framing of the question papers right to the declaration of results and the final recruitment, there should be a streamlining of the system and the procedures. Okay. And that should address the problem. Okay. Lakshya Pratap Singh, final word to you. As a student, as someone who is an aspirant of job and has taken multiple of these administrative services and other recruitment examinations, what do you think will ensure transparency? ये क्या बिल डायरेक्शन सही है, इंटेंट सही है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होने में आपको कितना वक्त लगेगा, आपको क्या लगता है? मैम देखिए, अभी राजस्थान में भी हम लोगों ने जो आरएएस परीक्षा है, आरपीएस की जो एग्जाम करवाता है, उसको यूपीएससी की तर्ज पर कराए जाने पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब राजस्थान में बनी तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि आरपीएससी को भंग करेंगे और सुधार करेंगे, आरपीएससी को यूपीएससी की तर्ज पर वो लागू करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने भी यहाँ पर एक मूवमेंट किया था, उसके लिए सरकार ने आश्वासन भी दिया कि वो इस काम को जल्द से जल्द करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से यूपीएससी के अंदर कोई इस प्रकार अनियमितता नहीं रहती है, निष्पक्षता रहती है, उस प्रकार अगर स्टेट बोर्ड्स भी अपने एग्जाम्स के अंदर नियमितता अगर रखते हैं, निष्पक्षता रखते हैं, और अगर इस कानून से मदद मिलती है तो निश्चित तौर पर लाखों छात्रों को देश के इससे फायदा होने वाला है। और बहुत उम्मीद लगा करके छात्रों ने, युवाओं ने लगातार इस वर्तमान सरकार को समर्थन दिया है, केवल इस मांग पर कि युवाओं को, बेरोजगारों को उनका हक मिल सके, उनको लगातार जो 5-6 साल अपनी जवानी के पढ़ाई में वो लगाते हैं और वो उनका सार्थक हो सके। और 12th फेल जो फिल्म आई थी, उम्मीद जी मैम, उस पर उसका क्या रोल देखते हैं कि ये सब पूरा प्रोसेस एक्सपेडाइट हुआ है? ऑफ कोर्स वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन ये भी तो क्लियर हुआ कि इस तरह का जो पेपर लीक या चीटिंग बहुत ही नॉर्मलाइज हो गया। इट हैज ऑलमोस्ट बिकम लाइक एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ क्लियरिंग एग्जाम्स। मैम बिल्कुल मैम, पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हमारे यहाँ तो राजस्थान में परंपरा है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। और ये लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने इतने पेपर आउट के दोषियों को हमने जेल में डाला, इतने हमने और आरोप लगाते हैं एक दूसरी पार्टियों के ऊपर। तो ये बड़े शर्म की बात है कि आपने जेल में डाला, ये कोई गर्व की बात नहीं है। वो पेपर आउट ही क्यों हुआ, वो पेपर लीक क्यों हुआ? बिल्कुल सही सवाल, पेपर आउट ही क्यों हुआ वो सवाल है। आपने उसके बाद एक्शन लिया और कितने साल के बाद रिजल्ट्स आता है, तो ये पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका होता है उससे पहले। थैंक यू सो मच। साथी ने बड़ी मछली वाली बात कही थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बाबूलाल कटारा जैसे को डाल दिया गया, लेकिन और जो लोग, हम अगर डोटासरा जी की बात करें जो शिक्षा मंत्री थे, उनके परिवार के लोगों को लगातार इंटरव्यू के अंदर उनको महत्वपूर्ण मतलब फायदा मिला। और उसके अलावा एक ही जिले से लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं आरएस की परीक्षा के अंदर, तो एक ही कोचिंग से जुड़े हुए लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाए अभिषेक, लक्ष्य, Radhe and Ranjit. I wish you all the best. We hope that for several like you, there is transparency, the intent
with which this bill has been brought by the government. Dr. Tanu Jain, Dr. Vikram Singh and Harsha, thank you so much for putting this story